What are the 4 defects which are associated with us, with all the human beings, which leads to the imperfect knowledge? And can scientific research offer the complete knowledge to us? Is it possible? And do Vedas, as proclaimed by spiritualists so many times, do they offer perfect and complete knowledge? Okay, so we are going to take down all these topics today. Okay, here you see the picture. आप लोगों के picture दिख रहा है? Can anyone tell me what is this first person? So all these 6 are blind men. First of all, to be clear. So these 6 blind men, they are feeling an elephant. So the first person, can anyone tell me in the chat box what is if he must be feeling like? What is an elephant like? Okay, someone has already written. Sir, I have question. Vedas are our scripture, means Hindus. How other religions follow it? They even don't believe it. I'm not getting who has asked this question. We will take the questions definitely as we progress in our session. But first, let me progress further. Soft thing. Piyush has written. The part he's touching is an elephant. Vishal. Piyush is writing soft thing. Okay. So he might want to grab elephant tooth like a tree trunk. Okay, okay. So let me tell. So the first person he might be feeling, you know, this looks like some snake. It's a curved sa hai, or looks like you know, maybe some other curved animal. अगर आप second person को देखोगे जो उसका tail पकड़ रहा है elephant को, उसको लगे यार ये तो कुछ रस्सी जैसा लग रहा है. Sixth person who's holding the leg of the elephant, he might be feeling okay, it looks like some tree trunk. Fourth person, you know, he might be feeling it's like a wall. And third person may feel कि कोई बड़े से कुछ तो fan है, कुछ तो है something. And fifth person might be feeling कि कुछ तो arrow है, the tusk of the elephant. So everyone must be feeling a different perception about the how an elephant looks like, because they are blind. So is any one of them wrong, totally wrong? And why they are totally wrong, if they are? And what is the right way to gain the knowledge? If these 6 blind men, if they want to gain the knowledge about the elephant, what they should do? So we'll discuss that at the end of our session. Okay. How do you think they can gain complete and perfect knowledge about the elephant? Okay, so there are 3 ways of gaining knowledge. First is pratyaksh praman, that is direct sense perception. जो दिखता है वो सच है. अनुमान प्रमाण, theories based on observation. I thought about it. It's my guesswork कि शायद ऐसा होगा, शायद ये वैसा होगा. So according to that we try to gain the knowledge. जैसे कहीं से कुछ noise आया और मैं सोचने लगा अरे ये noise शायद ना इस वजह से आई है. So that is also a way to gain the knowledge. And there is a shab praman. We hear from some authorities and then we accept them. Okay, first of all, let us start with the pratyaksh praman. The most common argument that the people say, they give when they say that we don't believe in the existence of God, we don't believe in the existence of soul, we don't believe in all this, you know, knowledge. What is the most common argument they give? Can anyone tell me as a science student? What is the most common argument people say that when they say that they don't believe in God, they don't believe in soul? Most common argument. We don't see God. Yes, thank you, Harsh. Harsh is writing, we don't see God. जो दिखता नहीं है तो है नहीं, right? Simple, है ना? So that is प्रत्यक्ष प्रमाण. हमको ऐसा लगता है कि जो मुझे दिखेगा वही सच होगा, और जो मुझे नहीं दिखेगा वो सच नहीं हो सकता. अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने जो बिडेन को अपनी आंखों से देखा है? How many of you seen with your own eyes? Okay, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग जिन्होंने इथियोपिया कंट्री के प्रेसिडेंट को देखा है? How many of you seen the president of Ethiopia? Do you believe such a personality exists? Or first of all, do you know Ethiopia country exists? Ethiopia, Eritrea, they are always at war with each other, right? But we have not seen them. Thank you, Pankaj, Ashwin, everyone. Thank you. So we have not seen so many things. In fact, if you ask, you know, genuinely, honestly to ourselves, 99.99999% of people or organisms or places we must not have seen, but still they exist. Yeah, Parth is writing. Very good argument. Another counter argument that comes is, if you want, we can see these people, right? Anuj is writing, we have seen them on TV, right? But we haven't seen God on TV. Okay, I will try to answer both the queries right now. Parth is writing, if we want, we can see these people on TV, or we can go and visit them. So by that logic, you can even see God also.
Like there is a qualification to see president of USA. आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको उतना time spend करना पड़ेगा, and then you can see him. And after going through many other procedures, you can see him. So similarly, there is a way to see God also. आप spirituality में आइए, practice करिए, and you can see God also. And the same way is there to see the soul. Now the second question that Alok is, नहीं Alok नहीं, someone else. So टीवी में देखा, टीवी में देखते हैं हम इनको, तो व्हाट इज ऑथेंटिसिटी ऑफ टेलीविजन, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क देम. अगर टीवी में तो आपको भगवान भी देखते हैं तो उस हिसाब से भगवान को भी मान लीजिए आप. सो हम टीवी पे फेथ रखते हैं, सो वी पुट अवर फेथ इन टेलीविजन. सो व्हाट द टेलीविजन इज शोइंग टू अस, वी अंडरस्टैंड, वी बिलीव दैट इट इज राइट. अभी जैसे यूक्रेन एंड रशिया का फाइट चल रहा है, राइट? नाउ पार्थ इज आस्किंग, सो यू हैव सीन गॉड? आई विल कम डाउन टू दैट पार्थ. थैंक यू. Gods, Anuj is writing, gods on TV are CGI. How do you know that the war that is being shown between Russia and Ukraine, that is not CGI? It's a lot of manipulation of information is going on when the war is there, right? This is called as disinformation campaign. जहाँ पे actually Russians, strike नहीं कर रहे हैं. जैसे एक दिखाया था उन्होंने, Ukraine president, he was shown in military uniform and it was told that he has joined the army and is fighting alongside with his army. But then again, that was a propaganda war because ये पहले का था, पहले के कुछ साल पहले का था जब उसने पहना था. Then another thing that this Ukraine people, because most of the media is usually controlled by the Western people, no? BBC, CNN, they have got far reach, unfortunately or fortunately, whatever, depending on which side you are. Now they have shown that they have destroyed, Ukrainian army has destroyed so many Russian warplanes, and they were showing the videos. Then someone pointed out कि भैया ये जो आप videos दिखा रहे हो ना, ये videos right नहीं है. These are not the right videos. And then later on they admitted, yeah, these are not the actual videos of the Russian warplanes getting hit. So this is all propaganda, right? But still we put our faith very innocently in the television. What they are showing is right. Whatever they are telling me is right. So please try to understand that we always put faith in our life on one person or one news channel or on one newspaper, on one news article on the internet, and then we accept it as the truth. Even if we accept it with a pinch of salt, but we accept it as truth. न्यूज़पेपर में आ रहा है, इनके बीच में फाइट हो रही है, हम में से कोई नहीं गया देखने कि रशिया और यूक्रेन में फाइट हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन न्यूज में आ रहा है, हमारा फेथ है न्यूज चैनल्स में, इंटरनेट पे, और उस फेथ की बेसिस पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ फाइट हो रही है, राइट? सो वी ऑलवेज पुट अवर फेथ. सो सिमिलरली इफ यू वांट टू गेन नॉलेज, नाउ हियर coming to this part, that here we are trying to gain knowledge by putting our faith in these things. So प्रत्यक्ष प्रमाण is we try to gain knowledge through the direct sense perception. लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट सेंस परसेप्शन में प्रॉब्लम है कि हम मेजॉरिटी चीजें नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम हमारा फेथ रखते हैं कि मुझे जो दिखाया जा रहा है वो सच है. जैसे हम लोग यूक्रेन नहीं जा रहे वाले हैं, रशिया नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम फेथ रख रहे हैं कि इतने मीडिया, इतने न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं तो सच ही होगा, इतना इंटरनेट पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, इतने इंटरनेट पे न्यूज आ रही है तो सच ही होगा. ये हमारा फेथ है. हम जाके डायरेक्ट सेंस परसेप्शन से नहीं कंफर्म कर रहे हैं, हमारा फेथ रख रहे हैं कि ये जो भी मुझे दिखाया जा रहा है इस वर्ल्ड के बारे में, इट इज ट्रू. You can write down questions on the question portal, every one of you. I request them so that later on I can take the questions together. तो ये हमारा फेथ है. So science, sense perception, direct sense perception से इनफैक्ट हम मोस्ट ऑफ द टाइम नॉलेज नहीं ले पाते हैं, हमारा फेथ रखते हैं. लाइक एयर हमको दिखती नहीं है, परसीव होती है. एक्सरेस हमको दिखते नहीं है, उसका इफेक्ट हमको विजिबल होता है. चेस्ट एक्सरे में जैसे हम लेते हैं चेस्ट एक्सरे वगैरह, दूसरा एक्सरे था, उसमें एक्सरेस हमको दिखता है, उसका इफेक्ट दिखता है, पर एक्सरेस हमको डायरेक्टली नहीं दिखती हैं. लेकिन हमको फेथ है कि एक्सरेस हैं. वैसे इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, कितने लोगों ने अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को देखा है? नहीं देखा है हमने, पर हमको हमारी साइंस की बुक्स जो है उस पर फेथ है. वी पुट आवर फेथ ऑन द साइंस बुक्स. व्हेन दे से दैट इलेक्ट्रॉन इज देयर, यस इट इज देयर. व्हेन दे से इट इज न्यूट्रॉन इज देयर, यस इट इज देयर. आपने देखा है क्या? नहीं देखा है ना. आपने डायरेक्ट सेंस परसेप्शन देखा नहीं, आप क्या आर्गुमेंट देंगे उसका? लेकिन हम देख सकते हैं ना सर, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. देख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, लेकिन कितने लोग जेन्युइनली देखने वाले हैं? लेकिन आपने अपना फेथ रखा ना. Now why you are putting your faith? Because you have seen the miracles of science, because you have seen the effects of the theories, when they are put into practice. The theories which have been given by the science, when they are put into practice, they show the effects, right? So sense perception, direct sense perception हम most of the time नहीं करते हैं, but we accept someone else authority.
and we understand that this is right. Now, what's the problem with this direct sense perception? So direct sense perception का problem क्या क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम, ताकि क्योंकि इतने लोग इतने उससे बोलते हैं ना कि जिस दिन हम, कई लोग बोलते हैं जैसे when I try to tell them about God, many times people say जिस दिन मुझे भगवान दिख जाएंगे मैं ऐसे भक्ति करूंगा ना कि बस भगवान भी देखते रह जाएंगे. Sometimes people say like that, right? Suppose myself and I can see some Yash and Krishna and all those. Suppose myself, Yash, Krishna, हम लोग यहाँ बाहर खड़े हो जाएं, बाहर सड़क पे वो चिल्लाने लग जाएं कि मोदी मोदी, are you there? If you're there, then come in front of me. If you come in front of me, I will accept your existence. आप नहीं आते तो मैं आपका existence को नहीं मानूंगा. How many of you believe that Modi will come to prove his existence to me? He will come and give me his, darshan to prove his existence to me. How many of you believe? He will not, he won't. By Sai, Sushant. How many of you, any one of you believe that he will come? Yeah, everyone is writing a direct message. You can write on journal box so that everyone can read it. Amit, Harsh. Yeah, thank you so much, Akshay, Amit. So it's very realistically speaking, he won't come. Who am I? I'm just a simple doctor, right? I have got no eligibility to attract. The same thing, when people, they challenge God, they say, भगवान को challenging mode में challenge करके बोलते हैं कि भगवान अगर आप हो तो आओ, और जब आओगे तभी मैं आपके existence को मानूंगा. अरे भाई, हमारी औकात क्या है, पहले तो समझ तो लो. नहीं, Parth is writing, Modi is a person, he cannot be present everywhere, but God is God. I agree with that. But at the same time, please try to understand. जब हम मोदी की बात करते हैं, he is just a simple prime minister of a small country like India, who is not even the number one country in the world. With no offense against India, but in many aspects, we are not the number one country, no doubt about that, right? But still, a simple prime minister can't come to me in front of me when I challenge his existence also. तो हम जब भगवान की बात करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करिए भगवान कौन है. भगवान केवल इस प्लेनेट के नहीं, इस यूनिवर्स के नहीं, जितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सल्स हैं, उन सबके क्रिएटर है, मेंटेनर है और डिस्ट्रॉयर है. Is that personality, right? So please try to understand such an important personality. If you think that he's so cheap कि हमने सिर्फ हाथ जोड़ा मंदिर में, वो भी बिना फेथ के, और वो भी चैलेंजिंग मूड में, और हमने सोचा कि वो हमारे को दर्शन देने आ जाएंगे, तो I think it is too much of getting simplistic about the reality of our insignificance and the reality of God's greatness. Okay, so Shreyans, if it's okay, if I come take your questions later on in the session, I will move ahead and you can please write down on the chat box because you have raised your hand. So the problem with the okay, now I will take a second part also that I will become more clear to it. Suppose अगर अडानी बोलता है कि मुझे मोदी को देखना है, how many of you think that he can go and see Modi? Adani or Ambani, some, or let us say Joe Biden. If they decide they want to see Modi, how many of you think that it is possible for them? Yes? Anyone can write down in the chat box, yes or no? Can they go and meet Modi? Can they talk with him immediately? Yes, thank you, Harsh, Suyash, Amit. Yes. Now, what's the problem between me and Ambani? The problem is in the eligibility. I don't have that financial eligibility to see him. What is the difference between me and Joe Biden? I don't have that political power, that strength with me to go and meet Modi. But these people have. They have their eligibility to go and meet Modi. The same thing with God is there. God also has set some eligibility criteria. He's not cheap, but at the same time, he's freely available also. That is the contradiction with God. And what is that eligibility with God? He's not asking for money. Everything belongs to him only. He's asking for your faith and love. So when we have faith and love, then we can go and see him. Otherwise, through a direct sense perception, if we try to see him, if we try to understand about him, or we try to understand about life, or we try to understand about the soul, it's practically speaking impossible. Okay. Now, what's the problem with the direct sense perception? Can Pratyaksh Praman, can seeing is believing, can give us the complete knowledge? Now, here you're seeing a railway track, right? कितने लोगों को लग रहा है कि रेलवे ट्रैक आगे जाके मिल रहा है? No, Harsh is writing, no, मिल नहीं रहा है, but that's because the
you know what is reality, but at the same time जब हम देखते हैं आंखों से ऐसे, अगर हम एक child like अगर हमारा vision रहेगा, our eyes are imperfect to see God, yes, so we will see that apparently they are meeting, या for example जैसे sky आगे जाके इसमें देखेंगे तो आप अर्थ को मिलते हुए दिखता है. If you ask a child will think like that, right? If we see on a mirror, concave convex mirror में देखते तो हमको हमारी image different दिखती है, distorted reflections, एक pencil ऐसे लगती है जैसे कि टूटी हुई है, which is not right. So is seeing believing all the time? No. Saying is not believing all the time. Mirage is saying, right? So many times we just don't get the right information through our senses. Now, what's the problem with our senses? The problem is that we have the 4 defects with us. What are the 4 defects? We are imperfect senses. Because of imperfect senses, we get illusion. Then we commit mistakes, and to hide those mistakes, we cheat. So how our senses are imperfect? को बोले क्या बात कर रहे हो? हमारे senses तो perfect है, super perfect. ये देखो हमारे senses कितने perfect हैं, हाँ? Our eyes are blind outside the range of 400 to 700 millimicron. That's it. ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है ना, उसमें इतना छोटू सा जो है ना, सिर्फ उतना ही हमको दिख रहा है. इसके पहले और इसके बाद के जो भी है वेवलेंथ हमको नहीं दिख रही है. तो अगर मेरी आंखों के सामने इतने सारे वायरसेस अगर घूम भी रहे हैं, एक्चुअली में जो घूम रहे हैं मुझे नहीं दिखेंगे. या फिर कोई बहुत ही मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अगर कुछ है तो मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरी आईज उतना बड़ा देख ही नहीं सकती है. वो इतना ही देख सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है आईज की. So we have to understand these eyes are too tiny instrument to see something which is as magnificent as God or as soul or so many things. So you have to understand it is limited. Just इतना ही हमारा विजिबल है. वो जो कलरफुल रेंज दिख रही है ना आपको, उतनी हमारी विजिबिलिटी, उसके पहले बात की विजिबिलिटी हमारी नहीं है. Our ears सुन सकते हैं हम नहीं. We are deaf outside the range of 20 hertz to take 20 kilohertz. Even like some animals, like elephant who can hear the infrared sounds, bats who can hear the ultrasounds, ultrasonic sounds, or dolphins for that matter, we can't hear that range also. वो बोलेंगे ठीक है हमको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा. आई विल यूज द माइक्रोस्कोप. मुझे नहीं दिख रहा है, ज्यादा दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर आप यूज भी करते हो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप व्हाटएवर, उसमें भी प्रॉब्लम क्या है? नाउ दिस नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट यूजेन वाइजनर, व्हाट ही पॉइंटेड आउट, इवन इफ यू फोटोग्राफ स्टार्स, अगर आप टेलीस्कोप यूज करके स्टार्स को फोटोग्राफ भी लेते हैं अगर आप, तो अल्टीमेटली व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू हैंडल दैट कैमरा एंड यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट दैट इमेज विथ योर आईज ओनली ना. आपने फोटो भी निकाला, फोटो निकालने के बाद भी आप उतना ही देख पाओगे जितना उस फोटो में आपकी आंखों को दिख रहा है. So many details you are going to miss. So we have to understand that these are very limited. अभी जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, can I see what is there behind my back? Can I see lateral side में इस wall के पीछे क्या है, या 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है? क्या मुझे दिखेगा? आपको किसी को दिख रहा है 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है? हम नहीं देख सकते हैं, राइट? क्या हम सुन सकते हैं 10 किलोमीटर दूर क्या बातचीत चल रही है किसी की? हम नहीं सुन सकते हैं. So our senses are imperfect, they are limited, and not only limited, they are very much limited. Then we get illusion also, like orange, our tongue, if orange is taken after eating sugar, it appears sour, or if orange is taken after taking lemon, it appears sweet. Skin, अगर आपका हैंड वार्म है और अगर आप उसी पानी को टच करो तो ठंडा लगता है पानी, और आपका हैंड अगर पहले बहुत ठंडा है और सेम टेम्परेचर अगर आप टच करो कंपैरेटिवली तो वार्म लगेगा वो. सो वी गेट इल्यूजन. अभी आप पिक्चर्स देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? What do you see in this picture? Leaves. Okay, nice. Samarth is writing leaves. Agree. The leaf is there. One leaf is there. Wow. A girl by NBM. Okay. Lady. Suyash. Old lady and girl. Ashwin. Yeah. Thank you. Boy bhi dikh raha hai. Okay. So there is an old lady also and there is a young lady also. Now, depending on what you are looking at, you can interpret the picture. So we get illusion. Move ahead. Okay. Sorry. अभी ये जैसे है, इसमें हमको क्या illusion दिख रहा है? इसमें एक्चुअली 3 कंप्लीट ब्लैक सर्कल्स हैं और उसमें एक व्हाइट ट्रायंगल रखा गया है, या 3 इनकम्प्लीट ब्लैक सर्कल्स हैं जिसकी वजह से हमें एक व्हाइट ट्रायंगल का इल्यूजन हो रहा है. व्हाट डू यू थिंक इज राइट आंसर? पैकमैन लग रहा है समर्थ को. यस, व्हाट डू यू थिंक इज राइट आंसर? 3 इनकम्प्लीट सर्कल्स. Both sir, depending on seeing perception. Yes, thank you Rohit. So that's my point is, so it's your sense perception.
राइट. सो वी आर गेटिंग इल्यूजन. सामने सामने कुछ दिख रहा है, उसमें भी हम इल्यूजन हो रहे हैं. एकदम सामने है, हमको पता नहीं है कि क्या राइट है क्या नहीं है. सो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन का प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेंसेस बहुत इम्परफेक्ट हैं और हम इजीली इल्यूजन हो जाते हैं उससे. दिस आल्सो देयर. अब इसमें कितने लोगों को मूव करते हुए दिख रहा है? इफ यू लुक एट द स्क्रीन, इट्स अपीयर्स मूविंग. कैन यू सी इट्स मूविंग? Yeah, but is it moving? No, we know it's not moving. इसको optical illusions बोलते हैं, right? You must be aware of this. So these are illusions. Again, these are moving when actually they are not moving, right? Now here, just look in this, dot, the dot, which is there at the center. और अपनी गर्दन को थोड़ा आगे पीछे करो. Just do that. What do you see? Can any one of you please write down the chat box? What do you observe? If you just look at the dot, yeah, they are moving. The circles, around it, they are moving. But they are not moving actually. It's my head which is moving. So I'm getting illusion. हम क्या हो रहे हैं? Illusioned हो रहे हैं. तो हम जिन सेंसेस पे इतना प्राउड फील करते हैं कि मुझे भगवान दिखते नहीं है तो मानेंगे नहीं, और ये लाइफ पे क्या बकवास लगा रखी है तुमने, खाओ पियो ऐश करो, ये क्या फालतू की बकवास है, भगवान सोल आत्मा, भाई enjoy करो लाइफ को. So many times people they say like that, right? Because they have so much of faith in their own sense perception. But here we can see, if you try to gain knowledge about life only through our sense perception, this is what happens. So all our senses have tendency to get illusion. Okay, then we commit mistakes. Like scientific knowledge था, brain एक point of time में science इसको brain को क्या बोलता था? It's an organ to pull the blood. It's not a joke. It's a fact. Brain was thought of as an organ to pull the blood. और उस टाइम जो भी साइंस के स्टूडेंट थे, उनको पूरा फेथ था कि ये ब्रेन ठंडा काम करने का ही काम करता है. जैसे अभी हमको फेथ है, जो हमको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, हमको पूरा फेथ है. So being a medical student, I don't want to pass some controversial things over here, but at the same time I know how the trials are conducted. Guidelines जो होती है ट्रीटमेंट की, वो कैसे आती हैं, फार्मा कंपनीज जो होती हैं वो कितना पैसा स्पॉन्सर करती हैं, कैसे ट्रायल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज चेंज होती हैं. So but this is how it is there ना. So but we have complete faith. नहीं, साइंस है, पूरा फेथ है जी हमारा. So no problem with science. I'm not an anti-science person. I'm a medical practitioner. Okay, I practice medicine. I treat patients. So science, yes, has its own wonders. It has done its wonders. At the same time, you have to understand, it is not an answer to everything in present stage. Maybe in future it can answer, because unfortunately it is based on what is seen or what is observable. So the commit mistakes. Brain was thought of as an organ to pull the blood. Pituitary or master glands, एक छोटा सा एक part होता है brain में जिसको pituitary gland बोलते हैं. It is also called as master gland. We can understand how great this gland is. But one time it was thought of a vestigial organ, just like appendix. Appendicitis होता है ना, appendix काट के फेंक देते हैं, जरूरत नहीं बॉडी में. वैसे इस pituitary gland को समझते थे कि vestigial organ, इसको काट के फेंका जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But now it is considered a master gland. And that time the scientists were confirmed कि भैया ये pituitary gland कुछ काम का नहीं है, फेंको इसको. ऐसे हबल कांस्टेंट, ये मिस्टेक्स हुई हैं साइंस में बहुत. 3 बार इसको बदला गया है और इस हबल कांस्टेंट के बेसिस पे पूरे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, डोंट नीड टू टेल दैट. सो अब क्या होता है, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हम इल्यूजन हो रहे हैं, हम मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं. तो फिर हम चौथी चीज क्या करते हैं, हम मिस्टेक्स को हाइड करने के लिए चीट करते हैं, राइट. अभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला था कि हमको भगवान ने नहीं बनाया, हम बंदरों से आए हैं, हमारे वंशज जो थे वो बंदर थे और बंदरों से हमारा उत्पत्ति हुई है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हम बंदर से आए तो बंदर भी हैं, हम भी हैं, वो बीच वाले लोग कहाँ हैं? वेयर इज दैट मिसिंग मैन? मिसिंग लिंक किधर है? तो 1914 में साइंटिस्ट लोगों ने एक निकाला था, वो मिसिंग लिंक को आज तक मिला नहीं है, फॉर दैट एवरीवन्स इन्फॉर्मेशन. सो उन्होंने एक निकाला था, पिल्ट डाउन मैन हॉक्स बोलते हैं उसको अभी. But at the time they brought one skull, एक skull लेके आए थे साइंटिस्ट लोग, and they said that कि उनको एक खुदाई में मिला था, and they were very greatly praised, those scientists who found that. But later on it was found that it was a hoax, manipulate किया गया था उसको. There was no missing link that they have manipulated one skull and made it appear like that it was a missing link. उसकी morphology change की गई थी.
and this was done by the great scientist and of that time. 1912 में ये आया था, 1953 में जाके फ्रॉड रिवील हुआ था. सेम विद बर्ड्स मिसिंग लिंक जो आई थी, यू नो, उसका भी हॉक्स निकला. सो साइंस में चीटिंग होती है, ऐसा है कि नहीं होती है. फॉर्जरी ऑफ एविडेंसेस इज देयर. सो प्रत्यक्ष प्रमाण में हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हमारे सेंसेस लिमिटेड है, हम इल्यूजन होते हैं, हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं और चीटिंग भी होती है. इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जब कोई किसी सब्जेक्ट मैटर पे अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमको बहुत कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. इट विल नॉट बी कंप्लीट and it will not be 100% foolproof information. Clear? We will get some information, no doubt, we do get, but at the same time it will not be 100% true. तो दूसरा तरीका है अनुमान प्रमाण, जैसा कि साइंस में यूज किया जाता है. अनुमान प्रमाण कहाँ यूज किया गया साइंस में? We'll come to it. Theory is based on observation. It may have been like this, or perhaps it was like this. Now it was given by Charles Darwin, who brought out the theory of evolution in his book The Origin of Species. उसने अनुमान लगाया था. अभी वो तो गया तो नहीं था पास्ट में टाइम मशीन लेके, तो भैया हम जरा देख के आते हैं पास्ट में क्या था. वैसा तो हुआ नहीं था. सो हाउ वी केम टू नो दैट वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स? ही थॉट लाइक दैट. प्लीज अंडरस्टैंड, ही थॉट लाइक दैट. अनुमान लगाया था उसने. इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एज इट इज पैराग्राफ उठाया गया. What is written? I am a firm believer that without speculation there is no good and original observation. After 5 years work, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. इसने खुद को allow किया speculate करने के लिए, और उन्हीं speculation को this I enlarged in 1844. इन्हीं speculation को उसने enlarge किया और उसको conclusion बना दिया और उसको इसने book बना के छाप दिया. That was the how the theory of evolution that came into existence. And he says that we came from monkeys. But there's enough scientific proofs which says that human beings have existed even millions of years ago. You can check on internet also for that matter. Just one example. It is his book, Origin of Species, 1964 edition, page number 184. Please read. How the bear evolved into a monstrous whale. एक भालू whale में convert कैसे हुआ? So what he said, एक भालू था, वो swimming कर रहा था, पानी में गिर गया, पानी में गिर रहा था, swimming कर रहा था. उसने अपना मुंह खोला, भूख लगेगी ना बेचारे को, पानी में गिरा हुआ है, तो उसने अपना मुंह खोला लाइक अ व्हेल, इंसेक्ट्स इन वाटर, खाने के लिए, और अपना मुंह खोलता चले गया और पानी में स्विम करता चले गया और वेल में कन्वर्ट हो गया. तो जस्ट रीड एज इट इज. इन नॉर्थ अमेरिका द ब्लैक बेयर वाज सीन स्विमिंग फॉर आवर्स विद वाइड ओपन माउथ, thus catching like a whale insects in water. Even in such an extreme case as this, if the supply of insects were constant, even if it's better adapted competitors did not already exist in the country, I can see no difficulty in race of bears by natural selection. So this is how whale came into existence. This is what's the answer he has given. अगर हमसे कोई इस तरीके से बात करे तो हम लोग क्या सोचेंगे? What is this, Baba? Someone is asking about dinosaur. Evolution does not take place in a day by Parth. I agree, Parth. Evolution, if at all it is there, it does not take place in a day. But this is what he has given. आप किसी भी भालू को पानी में धक्का देके देख लो. आप वेट करो ना, आपकी जनरेशन, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी वेट करके देखो, वो भालू अगर कन्वर्ट होता है क्या, या वो भालू बच्चे देगा पानी के अंदर और वेल में कन्वर्ट होगा क्या? Does how the evolution happens? But this is what the explanation was given. This is as it is. है ना, वेल कैसे बनी है बॉडी, उसका बॉडी कैसे बना है, ऐसे बना है. एंड अनुमान प्रमाण पे भाई साहब ने अनुमान लगाया था. वैसे जिराफ का उन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि घास कम पड़ रही थी नीचे, तो पेड़ ऊपर थे, पत्तियां ऊपर थी, तो वो अपनी गर्दन ऊंची करी और ऊंची करी और ऊंची करी, ऊंची हो गई गर्दन उनकी, जिराफ की. आप लोग भी ट्राई करके देखें एक बार, गर्दन ऊंची करें, थोड़ी थोड़ी और ऊंची करें और थोड़ी और ऊंची करें, देखिए 10 साल में हो सकता है आपकी गर्दन काफी ऊंची हो जाए. ऐसा नहीं होता है. यू विल ओनली डेवलप सम बोन प्रॉब्लम्स ओवर हियर. You know, neck is not going to get stressed out like that. But this is what the explanation they gave, he said. And what he said, the deers were there, and the deers, yeah, Sai Prasad is writing, if a normal person would have said it, they would think us mad. Yeah, but because he was a scientist, so Anuman Praman, तो हमने बोला ना भाई साइंटिस्ट है, भगवान है, साइंटिस्ट ने बोला तो सच बात है, स्पिरिचुअलिस्ट ने बोला तो गलत बात है, वो तो अंधविश्वास है, और ये बोले तो बहुत अच्छी बात है. तो इन्होंने बोला है साइंटिस्ट है, तो जी see I am not against any science, please, I am repeating it again and again and again and again. Science is wonderful, science has done wonders. As a medical practitioner मैंने खुद ने बहुत दवाइयां दी हैं पेशेंट्स को, देता हूं, अभी भी ट्रीट करता हूं, और बहुत पेशेंट्स ठीक भी होते हैं. I am just trying to tell you, don't be a blind follower.
just because the science is telling something, right? So when the science says that God does not exist, or when the science says that you are no more than a bunch of chemicals, just a bunch of atoms and molecules, and no soul exists because they can't see the soul in present stage of science, that doesn't mean the soul does not exist. Or when they define the life only, what is life? When they say हमारे पास है manual life का manual क्या हमारे पास में? तुम सिर्फ bunch of chemicals हो, बस यही हमारा life का manual. So don't believe in that. When we believe in that, then we frustrate in life. हम लाइफ में फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर हम सोचते हैं यार क्या है, क्यों मैं लाइफ में इतना परेशान हूँ. And then people commit suicide also. People take out to all the bad habits because they just don't know what is life, what is right, what is wrong. Right wrong को कोई definition ही नहीं है ना. काहे का definition right wrong का? अगर हम सिर्फ bunch of chemicals हैं तो what is right, what is wrong, what is morality? Then morality is just a lack of opportunity. What is morality? Morality is lack of opportunity. मुझे opportunity नहीं मिली इसलिए मैं moralist बन गया. No girl proposed me, so that's why I am, bachelor, or that's why I am, brahmachari. I'm ascetic. What is nonsense? What is this nonsense? Okay, so we just don't be a blind follower. That's what I'm trying to bring out. So that's what they said. Okay. या तो बस साइंस के बहुत सारे मिरेकल्स भी हैं, इतने सारे हम देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब आए हैं, रिसर्च ने क्लेम किया है, इतने सब कुछ आ रहा है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ साइंटिफिक रिसर्च का प्रॉब्लम. ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था 1900s में, समथिंग 1800 में, सॉरी, प्लेग हुआ था, और उसमें साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि भाई उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को ये लगा कि जो प्लेग होता है ना, ये बिल्लियों से होता है, तो बिल्लियों को मार दिया जाए, प्लेग खत्म हो जाएगा. धड़ाधड़ लंदन वगैरह जितने भी यूरोपियन कंट्रीज पे थी, वहां पे उन्होंने खूब सारे जो कैट्स थी उनको मार दिया. एंड थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? प्लेग किससे होता है? विच एनिमल? Even though you're not medical student, I think you must be knowing. Some of you might be knowing the answer. Rat. Yes, thank you, Suyash. बाद में उनको पता चला रे भाई बिल्लियों से नहीं, चूहों से होता है. And it's a true story, huh? It's a history rather. लेकिन तब तक क्या हो सकता था? बिल्लियां सब मारी जा चुकी थी, practically speaking, and the rats they proliferated like anything. तो प्लेग फैलता चले गया. So half knowledge is dangerous thing, but half knowledge comes from प्रत्यक्ष प्रमाण and अनुमान प्रमाण. जब सिर्फ हमारे सेंस परसेप्शन पे हम फेथ रखते हैं. Okay, so we need full knowledge. अगर आपके पास कोई भी मशीन ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज उसको कैसे ऑपरेट करते, पूरा नॉलेज नहीं है, तो फिर आपकी हालत ऐसी हो जाती है जिसमें इट्स कॉमिकल हो जाती है. आई कांट शो यू द वीडियो बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. ओके, सो वी अंडरस्टैंड कि हम साइंस के थ्रू पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाते हैं. हम इस यूनिवर्स को नहीं समझ पा रहे हैं, या पूरा कंप्लीट नॉलेज हमको इस यूनिवर्स के बारे में, लाइफ के बारे में, या खुद के बारे में, भगवान के बारे में नहीं आ रहा है, तो फिर हम कैसे समझेंगे भगवान को? वेयर इज दैट मैन्युअल which tells us about this cosmic manifestation, which tells us about ourselves, which tells us about life? So where can we get that knowledge? So that is if we hear from a bona fide authority. जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, so many times, yeah, someone is writing Bhagavad Gita, someone, yeah, Ajinkya is writing Bhagavad Gita, thank you. तो जैसे हम कॉलेज में भी जाते हैं तो so many things, you just accept as it is what is written in your science books. आप जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हर चीज पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाते हो, हर चीज को आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करने नहीं जाते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो. क्यों? क्योंकि आपकी बुक्स में लिखा है और उन बुक्स पे आपको फेथ है, वो बुक्स आपका शब्द प्रमाण है. They are coming from some authority. So if a knowledge comes from an authority, we accept it. We accept that it is true, right? True. But जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, इमीडिएटली हमारा लॉजिकल माइंड एकदम खड़ा हो जाता है और हम बोलते हैं क्या बात कर रहे हो सर, अंधविश्वास है ये तो, हमको देखना है, अगर दिखेगा तो हम मानेंगे. भैया तूने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख लिए तेरी जिंदगी में, ये बता दे मेरे को. नहीं देखे, मानता है ना? So I'm not saying that be a blind follower in spirituality also. Practice it with your eyes open, with your ears open, use your intelligence, but at least keep your mind open and then practice it. नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो बड़े बड़े कांड करते रहते हैं, फिर उनके भक्त बन के we'll feel more sorry for ourselves. So we have to understand that we have to approach a right person. जैसे इंजीनियरिंग भी है, राइट? इंजीनियरिंग भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो फ्रॉड हैं. अगर आप फ्रॉड कॉलेज के पास जाते हो और आप चीट हो जाते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सारे कॉलेजेस फ्रॉड हैं. There are some genuine colleges which gives the genuine degrees also.
सो सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे फेक लोग भी हैं, फुल्ली एग्रीड, पर बहुत सारे ऑथेंटिक लोग भी हैं। तो हमको अप्रोच करना है राइट लोगों को, ताकि हम राइट इंफॉर्मेशन ले सकें उनसे, हम राइट वे में प्रैक्टिस कर सकें। So we have to hear from a bona fide authority. Now, how to know who is bona fide, who is not a bona fide authority? So we'll come to that part. Sorry. Yeah. So Krishna is saying in Bhagavad Gita 4.2, that is 4th chapter, 2nd verse. What Krishna is saying? Evam parampara praptam imam rajarsayo vidu. So Krishna is saying to Arjuna कि परंपरा में ये नॉलेज आया है अर्जुन को क्या बोलते हैं, ये नॉलेज मैंने सन गॉड को दिया था, सन गॉड ने फिर मनु को दिया, मनु ने आगे दिया, और ऐसे ऐसे पास आउट होता रहा है, वन पर्सन आफ्टर द अदर पर्सन, फिर इसने अपने डिसाइबल को दिया, इसने अपने डिसाइबल को दिया, बट ऑल दोस पीपल जिनको ये नॉलेज दिया वन आफ्टर द अदर, उनके नाम हिस्ट्री की बुक्स में हैं। एंड व्हेन सच नॉलेज इट कम्स डाउन and we accept that knowledge, and which is coming through a parampara system as proclaimed by Krishna himself, as proclaimed by God himself, and it is written in an authentic scripture, a book like Bhagavad Gita, and when we accept that knowledge, then we can be sure, okay, that I am getting the right authentic knowledge. I can practice my life based on this knowledge, and then I can see whether I am happy or not in my life. Then I can see, whether my questions about life and about all this existence, whether they get answered or not in a very satisfactory way. So we have to approach an authentic parampara, we have to approach an authentic system, we have to approach an authentic book. Suppose if a child, he wants to know who his father is, so what he will do? Two ways are there. One thing is, जाओ भाई जितने भी दुनिया में मेल्स हैं सबके जाके जीन्स चेक करो और खुद के जीन्स चेक करो, and then compare it. But practically speaking, it is not possible. That is called as inductive knowledge. खुद के बलबूते पे करेंगे जी, हम खुद पता करेंगे. What is the other method? Other method, simply the child asks the mother, mother बोलती है कि भैया तुम्हारे father है, accept, okay, this is my father, that's it. So similarly, Vedas जो हैं, they are like our mother. God is like our supreme father. So we want to know about our supreme father, God, कि God क्या है, कैसा दिखता है या नहीं है, पहली बात, और क्यों मुझे लाइफ में ऐसी सिचुएशन में डाल के रखा है, what he wants from me, मुझे क्यों इस धरती पे भेजा गया है, why I am not happy in this world, मुझे जो चाहिए भगवान दे क्यों नहीं देते हैं, इतना तो प्रे करता हूँ, इतना तो मंदिर में जाता हूँ, क्यों नहीं मिल जाता है मुझे, इतनी अगरबत्ती लगाता हूँ, हाँ क्यों नहीं होता, इतनी आरती करता हूँ. So all those answers we have to gain from the scriptures, who are like our manuals. They are our manuals for life. They will tell you, they will guide you how to lead our life. They give us knowledge. They give us GK, general knowledge, God knowledge. Like mantra, power is there, and mantras, they have power. So all this knowledge has been given in our scriptures like Vedas. जैसे हमको कोई नॉलेज लेना होता है, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी हमको कोई नॉलेज लेना है, हमको कोई डिग्री लेनी है, तो हम किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, रेप्यूटेड कॉलेज में जाते हैं, ऑथेंटिक कॉलेज में जाते हैं. वी जस्ट डोंट गो एनीवेयर, इधर उधर किधर भी चला, यार क्या फर्क पड़ता है, डिग्री तो लेनी है, कहीं से भी ले लेंगे, और वो डिग्री वैलिड तो होनी चाहिए. आप जो डिग्री लेके आ रहे हो उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए बाहर. इट हैज टू बी ऑथेंटिक कॉलेज. सो सिमिलरली जब स्पिरिचुअलिटी में भी हम आते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में अगर जैसे मैं आपको पूछूं, लेट मी आस्क एनी वन ऑफ यू फॉर दैट मैटर, what is brainstroke, or what is brainstem infarct? Can anyone tell me what are the signs and symptoms of brainstem infarct? Can anyone tell me what is carcinoid syndrome? Can anyone tell me? आप लोग क्या करेंगे? Because you all are engineering student, I'm a medical student, I'm asking you something which is not familiar to you. So what you will say? You will say, either you will keep quiet or you will say, I don't know, sir. Simple. What is carcinoid syndrome? I don't know. No? Yeah. So Suyash is writing no. We don't know, right? पर जैसे ही अगर मैं ये पूछता हूँ, क्या आप लोग भगवान के बारे में कुछ जानते हैं? अरे सर क्या बात करो, मेरे को सब पता है. मेरे हिसाब से भगवान ऐसे है, मेरे हिसाब से भगवान एक एनर्जी है, मेरे हिसाब से भगवान एक लाइट है, मेरे हिसाब से भगवान सब जगह है, मेरे हिसाब से भगवान एक जगह है, मेरे हिसाब से भगवान है ही नहीं, बाहर में जाए भगवान, मेरे हिसाब से. तुरंत हमारा नॉलेज बाहर आ जाता है. सो जब मेडिकल साइंस एक छोटे से इस बॉडी के बारे में जब हम बात करते हैं, आप लोग आपका इग्नोरेंस एक्सेप्ट करते हो. तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सो विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग, व्हाई डू वी क्लेम टू बी द नोअर? व्हाई डू वी क्लेम दैट वी नो एवरीथिंग अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? भगवान की पूजा कैसे होनी चाहिए, भगवान को कैसे वर्शिप करना चाहिए? व्हाई डू वी क्लेम दैट व्हेन वी डोंट हैव एनी ट्रेनिंग फॉर व्हाटसोएवर फॉर दैट मैटर? हमने एक बुक नहीं पढ़ी है कभी उस बारे में ढंग से. हमने कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है, कितने लोगों ने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है, कितने लोगों ने वेदास को हाथ लगाया है, या कुरान या बाइबल पढ़ी है पूरी. बट वी क्लेम कि हमको सब पता है, हम लोग हमारे हिसाब से लाइफ जिएंगे.
और हम लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर भगवान को गालियां देंगे, क्रिएटर को गालियां देंगे, खुद को गालियां देंगे, पेरेंट्स को गालियां देंगे, हम कुछ क्यों नहीं हुए लाइफ में, प्रॉब्लम क्या है लाइफ में. So please approach an bona fide authority. It's also a knowledge. It's also a branch of knowledge. So authorized books, authorized teachers, please accept them. Like अभी जैसे आप वेदास में आप देखो तो इतना नॉलेज दिया हुआ है, इवन शास्त्र, विमान शास्त्र के बारे में. आपको जानकारी के लिए बता दूं, यूरोपियन कंट्रीज में, इवन इन यूएसए, they are researching on our Sanskrit textbooks. Please listen carefully. They are researching on our Sanskrit textbooks. Now it's a very unfortunate situation that we as Indians don't have faith in our own ancient wisdom, but these people are doing that. They are researching कि हमारे संस्कृत जो टेक्स्ट बुक उसमें साइंस के बारे में क्या क्या दिया गया है, and they are getting benefited also from it. Especially Germany and USA, they have that. So Vedas have predicted about Gautam Buddha and Srimad Bhagavatam, Chanakya, Emperor Ashoka, Jesus Christ, Prophet Muhammad, Chaitanya Mahaprabhu. So many. They have been predicted in various different scriptures. I don't want to go in details of it because we are running short of it. Tulsi Gabbard, it's a US Congresswoman. I hope you are aware of her. She also told what is the relevance of Bhagavad Gita. So many present day politicians or generation of people who are at high post, they accept it. हमको एक्चुअली ये वेदास पे या स्क्रिप्चर्स पे फेथ इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोगों ने से कई बार रामायण देखी होती है, रामायण में से आता ना, एक तीर आ रहा है जू, उससे कलर्स निकल रहे हैं, दूसरा तीर आ रहा है जू, दोनों टकराते हैं, गायब हो जाते हैं. या एक तीर आ रहा है और उससे खूब सारे तीर निकल रहे, हमको लगता है वाओ क्या फैंटेसी है. वो राक्षस दिखते हैं, हवा में उड़ रहे हैं राक्षस, हमको लगता है वाओ क्या फैंटेसी है, क्या फेरी टेल है. एंड वी लूज आवर ऑल ओवर फेथ. इतने सारे देवी देवता हैं, भगवान को ने पता ही नहीं चल रहा है, इतने देवी देवता बना दिए हैं. एंड देन वी इमीडिएटली से अक्षय स्लाफी देन हम लोग बोलते हैं व्हाई आवर स्क्रिप्चर्स आर लाइक दैट. तो इसके हमको फेथ नहीं आता वेदास, बट देयर इज आंसर फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस कि व्हाई इट इज लाइक दैट. जब हम साइंस में बहुत सारी चीजें ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं, तो वेदास की जब बात आती है, स्क्रिप्चर्स की बात आती है, भगवत गीता, भागवतम, भगवान, सोल, ये सब जब बातें आती हैं, तो इमीडिएटली हम क्यों ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं कि मुझे अभी देखना है और देखने के बाद ही फेथ रखूंगा. हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हम पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करें, उसको ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिस करें, एंड देन वी सी व्हाट द इफेक्ट इट इज प्रोड्यूसिंग इन अवर लाइफ. जब हम भगवान पे फेथ रखते हैं इन राइट वे, जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, ही शोज मिरेकल्स. भगवान भी मिरेकल्स दिखाते हैं आपकी लाइफ में. ऐसा नहीं है कि भगवान कोई बहुत दूर है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिया आपको, आपके आगे मरो, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. ओनली थिंग इज वी शुड हैव लव फॉर इट. So many things are there which can never be proven in science, like Heisenberg's uncertainty principle, iota number, laws of thermodynamics. They can never be proven in science, but still we accept them in science. So there are various institutions are there for Vedic knowledge we want to gain. There are various sampradayas are there. Sampradayas means there जहाँ पे authentic way में knowledge passed down हुआ है. So we can approach any of those authentic sampradayas and gain the knowledge. Okay. So this is how the Vedic wisdom has come down in the disciplic succession. Okay, so that's it for today's session. These are the the Vedas. This is how the Vedas have been divided into different branches: Shruti, Smriti, and then Ved, Upved, Vedanta, and all those. And they deal with so many aspects of life. They are the manuals of life because they deal with astronomy. They deal with अभी जैसे योगासन है जो बाबा रामदेव जी ने काफी फेमस कर दिए हैं, वो भी एक पार्ट है, वेद का ही पार्ट है, आयुर्वेद वेद का पार्ट है ना. जो अभी मेडिटेशन जो इतना फेमस हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो भी वेदों का ही पार्ट है, मेडिटेशन. सो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ वेदास ओनली व्हिच हैव बिकम सो फेमस नाउअडेज. Like in America and all those those places, European countries, they are switching to organic farming. Organic food is very high. तो ऑर्गेनिक फूड वगैरह सब कहाँ था, ये सब हमारे पहले के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, हमारे एंशिएंट कल्चर में था ऑलरेडी. So we are going back to the same ancient wisdom nowadays. Okay, any questions? So okay, thank you very much sir for the wonderful session. Maybe this is very thought-provoking session,
And yes, I've shared the portal also, question portal, and some 5-6 questions are there. And if anybody who wants to ask the question directly to sir, they can raise their hand. I will give them permission to mute themselves. And before that, I will share the test link for the today's session. It will be open till 8 o'clock. So you have to give that test for the today's session, PDW 5 session. So I will be posting in chat box. And till now, till then, if anybody has any questions who want to ask them by unmuting themselves, directly want to ask, they can ask to the sir. And thank you very much. One sir, question I'm for seeing, this. Sai Prasad, he has asked one. Yeah, sorry. Sai Prasad has one good question, direct question to me. He's saying, why aren't such books available easy to us? So let me answer that. कई लोग पूछते हैं, I've given these sessions previously also to other colleges, and the students they ask, सर आप मुझे वो वेदास दिखा सकते हो जो 1000 साल 5000 साल पुराने हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट वो दिखा सकते हो क्या, जहाँ पे वो लिखा गया था, वो कहाँ गया, वो क्यों गया जब लिखा था तो. So if you have gone through your history properly, please understand, at one point of time, India was the center of learning for the whole world. जैसे भी ऑक्सफोर्ड वगैरह जो है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑल दोस यूनिवर्सिटीज पहले वैसे इंडिया में होती थी, तक्षशिला एंड नालंदा. These two were the great universities which were there in India, and students from all over the world they used to come to India. सीखने के लिए आते थे इंडिया में, और वो नॉलेज खाली स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होता था, वो पूरा मटेरियल नॉलेज भी होता था, जिसमें आपको हर चीज के बारे में बताया जाता था. Like it was told about astronomy, it was told about medical knowledge was given, all the types of, even fighting, martial skills they were being taught. जैसे चाइनीज है, चाइनीज आर फेमस फॉर देयर कुंग फू, राइट. तो कुंग फू का ओरिजिन जो हुआ था उसके लिए भी एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल है. वन इंडियन पर्सन वाज देयर, बुद्धि गया, आई थिंक दैट वाज हिज नेम. This person was sent from South India. He went over there. It is written. You can go and check on the internet. Whatever I'm telling you. This person went and he taught Chinese people. Because वहां पे क्या होता था, जो monks थे उनको वो बहुत डेकॉइट्स वगैरह जो रहते थे उन मोनेस्ट्रीज के अराउंड, वो बहुत ट्रबल करते थे. सो दिस पर्सन, ही वाज कॉल्ड फ्रॉम साउथ इंडिया, ही वेंट ओवर देयर, ही टॉट दोस monks how to protect yourself, and that's how the kung fu came into existence. So this Takshila and Nalanda universities, they were the center of learning. India was the center of learning. यहाँ पे सारी बुक्स थी. हमारे वेदास में जो नॉलेज दिया है, इट वाज ट्रिमेंडस. दिस वाज एक्चुअली द मैनुअल ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान के बारे में नहीं बोला गया है. वेदास दे कवर एवरीथिंग. आपकी लाइफ के जितने एस्पेक्ट आप सोच सकते हो ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी आप सोच सकते हो, सब कुछ वेदास में कवर है. और इतने thousands and thousands of scriptures थे. So when the Britishers they came to India, they wanted to rule this country, right? Yeah, Raj has written to me that this library got one. So when the Britishers they came to India, one this person was there, a very bad person, Lord Macaulay. You can search on the internet whatever I'm telling you, Lord Macaulay. So he gave one speech in the British Parliament. He said that it was something, I think 1815 or 1830 something, exact year I'm not remembering, but he gave one speech in the British Parliament. Very famous speech is there, you can see on the internet. And what this Lord Macaulay said that, he said that we the Britishers can never rule India. India पे हम रूल नहीं कर पाएंगे. वो क्या बोला, मैंने पूरे इंडिया को ट्रैवल किया है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, 10 years, 10 साल तक घुमा था ये बंदा, 10 साल तक ये बंदा घुमा, और क्या बोलता है, मैंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, मुझे एक बेगर नहीं मिला. He couldn't find one single beggar in this country 10 साल के अंदर. Just imagine the kind of prosperity this country must be having. वो भी कब मुगल राज खत्म होने आ रहा था तब की बात है, not even before मुगल रूल. अगर मुगल रूल से पहले की बात करो तो वर्ल्ड का 25% जीडीपी सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता था. 25% जीडीपी जो यूएसए भी नहीं करता अभी. Even the USA, the sole superpower of this world, still doesn't produce 25% of the GDP of the world. USA का number 1 GDP है, by nominal way. $21 trillion US का GDP है, and China is second with 14-15 trillion dollars. But even this USA is nowhere near what India was before Mughal Empire. Mughals came into here, even before Britishers. But that was the prosperity we were having. Why we were having so much of prosperity? Because हमारा जो lifestyle था, हमारा जो trade का culture था, हमारा जो life जीने का तरीका था, उसके हिसाब से we were very very prosperous, and we were very very God conscious people. So spirituality भी हम लोग बहुत advanced है, materially भी हम लोग बहुत advanced है. So this Lord Macaulay, what he suggested, अगर हमको इंडिया को रूल करना है, इस हालत में अगर हमको करना है, तो इनका जो faith है इनकी culture पे, उसको destroy करना है. It's a fact. This is the statement given by him. And what he said,
let us replace their education system. And the Britishers, the first thing they did was they burnt our universities. 6 महीने लगे थे उनको हमारी सारी बुक्स जलाने में. 6 months they took. 6 months, 6 महीने, just imagine. आप किसी लाइब्रेरी को आग लगाओ तो कितने दिन लगते हैं? 1 दिन 2 दिन में पूरी जल जाएगी. उनको 6 महीने लगे थे उसको जलाने में. इतनी बुक्स थी हमारे पास में. अभी पूछते हैं ना लोग कहाँ है बुक्स, but it's a fact, it is given in this history. So this Britishers, they burned all our textbooks. फिर ये अपने वर्जन निकाले इन्होंने अपने टेक्स्ट बुक के कि इंडिया में आर्यंस आए, द्रविडियंस थे पहले से ही, और ये आर्यंस ईस्ट वेस्ट एशिया से आए, मिडल ईस्ट कंट्री से आए, and that's how they divided India. So that's why we don't find our ancient textbooks. But still ऐसा नहीं है कि अभी भी टेक्स्ट बुक्स नहीं है. अभी भी so many textbooks are there which are thousands of years old. Like Philadelphia University है, which contains thousands and thousands of what we say manuscripts, is holding that, which are thousands of years old, Sanskrit manuscripts. So we do have very textbooks which are thousands of years old and which deals with it. Yeah, thank you so much. Any questions were there? You said 5-6 questions were there. Where are they? So that was the answer to the question why we are not finding those Vedas in those ways. Those manuscripts में क्यों नहीं मिलते? Rohit? Yes, sir. I will just read it out. Just shared the link, students, for the test. So those means link अगर ऊपर गया तो you can just check. I just posted now also. Okay, I'm just and the opening it. correction in the link that MMSOE call is not there. I have the technical team has changed the corrections what are there, so you can just, and I will just read out sir questions from the students. Like there is a question from Alok Kumar, like sir, as Vedas are Hindu scriptures, and how other religions follow it as they don't believe in it? How other religions? Yes. As Vedas are Hindu scriptures, and how other religions follow it as they don't believe in it. Okay. Maybe it was trying to asking that other religions are also following, but they don't believe in the Vedas. Yeah. See, point that I'm trying to make out is not that कि हमको सिर्फ वेदास को फॉलो करना है. पॉइंट में ये करने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमको लाइफ के बारे में जानना है, अगर हमको भगवान के बारे में समझना है, तो हमको थोड़ा सा साइंस से हटना भी पड़ेगा. आप कुरान पढ़ना, अगर if you are a Muslim you can read Quran, if you are Christian you can read Bible, and if you have faith in Vedas you can read Vedas also. But the great thing about Vedas is that वो सिर्फ भगवान के बारे में नहीं, आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं. वो हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं. Everything, the 4 Vedas, the Rig Veda, Yajur Veda, Arth Veda, Sam Veda, they deal with every aspect of life. Whatever questions you have in mind, the answers are there. Like one book is there, Surya Siddhant. Now this book, it tells us about astronomy. But this book was written something like 2000, 3000 years before. Usme Surya Siddhant mein the distance between the earth and the sun and the sun and the moon is being given. Exactly same. You can check on the internet. Exactly same. Precisely same. So we अगर हमको चलो इस बात पे भी वेद नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी सही है या नहीं, पर ये तो हमारे सामने प्रूफ है कि हजारों साल पुराने इन लोगों को कैसे पता था कि अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है. उस टाइम तो नहीं था ना सैटेलाइट्स. हमारी नॉलेज के हिसाब से हमको जो बताया गया है वेस्टर्न कंट्रीज ने जो हमको बताया है उसके हिसाब से तो सैटेलाइट्स नहीं थे तभी. तो इन्होंने कैसे मेजर किया होगा डिस्टेंस? हाउ इट इज सो एक्यूरेट? वो मैन्युस्क्रिप्ट तो है हमारे पास thousands of years old, right? So please try to understand that हमको थोड़ा सा scriptures which are authentic scriptures, उनको थोड़ा सा पढ़ने का टाइम निकालना चाहिए to know about life. They are the manuals of life. भगवान ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया के साथ मैनुअल भी बनाया, और वो मैनुअल क्या बनाया भगवान ने? ये स्क्रिप्चर्स बनाए. जैसे ये फोन है, ये लैपटॉप है, या फिर कोई फैन है, अगर कुछ भी अगर साइंटिस्ट बनाते हैं तो वो लोग उसके साथ एक मैनुअल भी निकालते हैं. कोई भी कंपनी होती है, कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, मैनुअल निकालती है उसको कैसे यूज करना है. तो भगवान ने भी दुनिया बनाई, हमारी बॉडी बनाई, हमको बनाया, भगवान ने मैनुअल निकाला
कि भैया तेरे को इस दुनिया में कैसे रहना है, वो मैनुअल क्या है, वो मैनुअल स्क्रिप्चर्स हैं, हम वो मैनुअल पढ़ते नहीं है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर भगवान को गालियां देते हैं, और फिर हमारे हिसाब से जो मर्जी है करते हैं, और फिर सुसाइड करके मर जाते हैं, या फिर एडिक्शंस में आ जाते हैं हम लोग, गंदे गंदे एडिक्शंस में आते हैं, और फिर उन एडिक्शंस में और फ्रस्ट्रेट होते हैं, और लाइफ में हमको सक्सेस मिलती नहीं है। फिर क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, right? So please try to understand. God has given answers to all the questions, that all the possible questions that we can have in this life. We can try to read it. Read it. Okay. So we can read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita as it is, like Srila Prabhupada has written this. उसमें एक एक word का संस्कृत word का translation है. So when we read such authentic books, we will get the answers. Okay. So not only Vedas, you can read Bible, Quran also for that matter. Which Veda is best to read by asked by Ashwini? Veda is too voluminous for us to read. I suggest Ashwin, you can read Bhagavad Gita as it is. 700 shlokas are there in Bhagavad Gita as it is. Or Srimad Bhagavatam, which has got 18,000 shlokas, but Bhagavad Gita can be read. 700 shlokas are there. So word to word translation is there in Bhagavad Gita as it is, particularly as it is. I'm talking about that Bhagavad Gita, and we'll get answers. Most of the answers, all the questions that we have. Yes. Any other? Yes, sir. Next question is there. That can we prove that God exists without these analogies? See, it is very difficult. Suppose who is asked, can I know the name of the person? Yes, sir. Sir, he is like Vibhute Anuj. Okay, Vibhuti Anuj. I agree with you that without analogy, if you want to prove the existence of God, it will be difficult. But please try to understand. The same logic applies in this world also, but we accept it. So many times, हमको ये समझना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस या फिर हमारी कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है समझने, कुछ चीजें समझने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोमालिया. सोमालिया एक कंट्री है वर्ल्ड की, वेरी पुअर कंट्री. सोमालिया इज बेटर नोन फॉर इट्स पायरेट्स, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस गोइंग ऑन. अगर कोई जाके बोलता है कि मेरे को ना सोमालिया में वहां के ट्राइबल लीडर की एग्जिस्टेंस के बारे में आप सर आप प्रूव करके बताइए, अगर आप मुझे ऐसे चैलेंज करते हैं, या फिर मैं आपको चैलेंज कर दूं, अनुज कैन यू प्रूव इट? अनुज प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे बोलिए, क्या आप प्रूव कर सकते हैं या करेंगे आप प्रूव? आप बोलेंगे सर इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ मनी वहां जाना, और वो भी इतना रिस्की वे में वहां पे जाके उसको ढूंढना, देखना, पढ़ना, समझना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? बट वी कीप आवर फेथ ऑन द ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी एक्सेप्ट इट. बहुत बार लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं. अभी जैसे यूक्रेन रशिया में जो चल रहा है, अगर कोई बोले प्रूव करो कि इनके बीच में वॉर चल रहा है, अरे आई कांट प्रूव इट बाबा, यू जस्ट हैव टू हैव फेथ ऑन द टेलीविजन चैनल्स, यू हैव टू हैव फेथ ऑन दोस articles, those media outlets. You just have to faith and you have to accept whatever they are saying. That's it. You can't prove it, right? It's very difficult. So similarly about God, but what is the other way? Other way is that you accept those sources of information, practice them in your life, and see the results. When you practice and you see the result, then your faith will increase. And another way is like some people say कि मुझे लेकिन ना आपने भगवान को देखा है क्या? मुझे इतना भाषण दे रहे हैं आप, खुद ने देखा है क्या भगवान को? So the fact is, जैसे for example मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, let us say I'm in Pune right now and I have to go to Delhi, और मुझे कोई पूछता है कि सर आप यहाँ से दिल्ली कैसे गए हैं क्या कभी? मैं बोला चलो दिल्ली तक तो नहीं गया हूँ मैं, लेकिन आधे रास्ते में हूँ अभी, और आधे रास्ते में मुझे जो जो बताया गया था वो सब स्पॉट्स आए हैं. सपोज इफ आई एम गोइंग बाय ट्रेन, ये स्टेशन आए हैं जो जो मुझे चार्ट में दिखाए गए थे, रेलवे चार्ट में, वो सब स्टेशन आए हैं. सो आई हैव फुल फेथ कि आगे के स्टेशन भी आएंगे, क्योंकि इतने तो आ गए. सो सिमिलरली ऑन आवर पाथ ऑफ जर्नी टुवर्ड्स गॉड, सो मेनी थिंग्स वी परसीव, सी, एक्सपीरियंस, that increases our faith in God, even though we may not have directly seen God. Okay, so just keep your faith, approach authentic sources of information, practice them in your life, and you'll be able to see God also. Okay, I hope I have answered that question. Yes, sir. Sure. Amazing. And I will just request students, those who have not doubts, they can end the session, means they can leave the session. And those who have doubts, means basically there are only 2-3 doubts are remaining. So I will ask them to, sir, if anybody wants to leave, they can leave the session. Yeah, I concluded with the session. And if anybody who wants to ask the question directly to sir, they can just raise their hands. Okay. So sir, there are last 1-2 questions are there only. So I will just take. Yeah. But just one thing I want to repeat again,
कि why all this information is needed. लोग बोले हमको घंटा फर्क पड़ता है सर, क्या करना हमको ये सब पढ़ के देख के सुन के ना, नहीं चाहिए हमको, we are happy with our engineering. फर्क ये पड़ता है कि जब तक हमको ये नहीं पता कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारी एग्जिस्टेंस किस लिए है, it's very difficult for us to remain satisfied and happy in life for a longer period of time. Okay, so it's for our own happiness that we need to get the answers of this, because ये भी life का एक बहुत important aspect है. Okay, yes, please go ahead. Yes, sir. That's really amazing. So the question is regarding the soul from Anish Kumar. He's asking, can soul live in elsewhere? Can soul? Can soul is live elsewhere? It's maybe he's asking regarding can soul can be live anywhere without body or maybe. Okay. Can soul live without body? So you have to understand soul is antimatter. Okay, soul is a spirit. Spirit मतलब antimatter होता है. और इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मैटर का है. So when the soul want to experience whatever the material things are there in this world, it has to use some matter as a medium to experience the matter in this world. So the soul uses this gross body. ये जो gross body दिख रही है मेरी आपकी, इस gross body, इस matter को soul use करता है. जैसे मुझे गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन is a matter, है ना? I can experience that gulab jamun only, that matter thing, when I use some matter, that is this tongue and this teeth, which is also made up of matter, and with the combination of this matter with that matter, with the interaction of these two matters, the soul can experience. But soul has to identify with this body. जैसे आप गेम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी मेक इट सिंप्लीफाइड. जैसे आप कोई गेम खेलें, आप लोग गेम खेलें, तो अगर आप गेम खेलते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, तो आपको सबसे ज्यादा मजा कब आएगी? जब आप उस कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करेंगे उस गेम में. तभी तो वो जो कंपनीज होती है, गेमिंग कंपनीज क्या बोलती है, यू हैव लॉस्ट द गेम, यू आर, यू नो, जैसे कोई आप किसी गेम में किंग बन गए, तो उसमें क्या दिखाते हैं, योर आर्मी हैज लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट द वॉर. एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है, पर आपको इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो आपकी आर्मी थी, आप उसमें किंग थे. So you are wrongly identifying with something, and then when you get engrossed into it, when you have that wrong identification, then you enjoy it, or you become distressed also more. कोई मूवी होती है, जैसे मूवी देखते हैं, तो मूवी में हम हीरो के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. जितना हम उस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं, उतना उसमें जब इमोशनल सीन आता है तो हम रोते हैं. हमको पता है वो झूठा है, बट बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग विद दैट कैरेक्टर, सो विथ हिज इमोशंस वी क्राई. वो जब किसी विलेन को मारता है तो हम खुश होते हैं, अच्छा वो पिटाई किया, उसका बहुत परेशान कर रहा था, but actually हमको पता है वो सब झूठ है, but because we are identifying with that character. Similarly, the soul identifies with this body. When the soul identifies with this body, so when this body enjoys something, soul thinks that I am enjoying. और मस्त रहो, खुश रहो फिर उस illusion में. But we have to understand we are not this body. We are way beyond this body. Soul is soul, spirit, anti-matter, spirit, soul. So the pleasures and sense gratification which are done by this body are not all in all for soul. That we have to understand. I hope मैं बहुत ज़्यादा bouncer नहीं बोल रहा हूँ. No, sir, they are able to digest it. Yes, sir. So that's all. And if you want to questions, so I request, if anyone had any questions and they are not asked here, they can ask to their mentors. Mentors are there to clarify your doubts, to help you out from the doubts which are you are getting in the session. And after session also, if you feel I'm not able to understand these are the things, so you can free to ask to your mentors. And thank you very much, sir, for giving the thought-provoking and really enlivening session. I think that students will get the more and more deeper idea about the Vedas and all the scriptures. And thank you so much, sir, for joining. Thank you so much. It was an honor to be with all such intelligent class of students. Really very mind-boggling questions were asked by the students. Very challenging also. I'm very happy to see that. Thank you for all your active participation. Thank you. Yes. So we can all thank sir by quickly type thank you, a big thank you in chat box. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. And for students, thank you very much for the joining the session. Next week we will meet again with the new amazing topics about the STW and again with the PDW sessions. So stay tuned till the next session and all the best. Thank you very much.